Assalamu alaikum people, welcome to my channel. Today we are making banana bread. Its ingredients are: we need a bread mold and a bowl, medium soft bananas 3, a room temperature egg, vanilla essence 5 to 6 drops, powdered sugar half cup, oil half cup, cinnamon powder, baking soda, chocolate chips are optional, all-purpose flour and 1.5 cup. Let's see its method. First of all, peel the bananas and mash them with the help of fork. Now add oil into it and mix it well. Add powdered sugar and mix it with the help of a spatula. Now add 1 egg and beat it well with the help of fork. Take your time and beat well. After this, it's time to add vanilla essence. Cinnamon powder and baking soda. Remember, it's baking soda, not baking powder. And we will mix it. और सबसे एंड में इसमें जाएगा ऑल पर्पस फ्लोर. We're going to fold all-purpose flour with the help of spatula. इसमें हैंड बीटर यूज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. You can add chocolate chips if you want. It's totally optional. मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस करके रख लिया था. अपना ये बैटर जो है हमारा तैयार है. इसको हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे. Let it set and add more chocolate chips if you want. Now I'm gonna put it in the oven at 180 degrees centigrade temperature for almost 20 to 25 minutes. जी, तो ये हमारी ब्रेड जो है वो ऑलमोस्ट बेक हो चुकी है. इसे मैंने बाहर निकाल लिया था और 10 to 15 मिनट्स के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे बाहर. देन इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे. जस्ट लुक एट द कलर. ये मैंने चेक कर लिया था, लेकिन मैं आपके सामने भी एक दफ़ा इसमें स्टिक डाल के चेक करके भी आपको दिखा देती हूँ. ये टोटली अंदर से पक चुका है.
फ्रेशली बेक और ये है इसकी फाइनल लुक। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। Do try this at home. I hope you liked this video. Thanks for watching and subscribe to my channel. Thank you.